Hello, hello, hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और yes, lot of it to be covered. इसलिए यार I was just gathering यार क्या क्या हमें cover करना है और इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया. तो sorry for people who are kind of waiting for last 2 minutes, but yes, definitely भाई काफी काफी सारी बातें करने हैं. That is why we are here. For the next 1 hour, across clubs will be covering. Of course, Chelsea के cover करेंगे, but Manchester United, Barcelona and Man City और एक और क्लब है बायर्न म्यूनिख भाई. टॉक अबाउट हाईजैक्स, लॉट ऑफ चीज हैपनिंग वहां पर. लकी वीडियो इन द हाउस. ओके, नाइस नेम बाय द वे, लकी वीडियो. हाय सर, हाय, नाइस टू सी यू एंड होप आप लाइक कर दियो स्ट्रीम को. लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, राइट? एब्सोल्युटली. और टू बोथ आवर चैनल्स, दैट इज अंकित भाई. डियोंग टू यूनाइटेड आएगा. ओके, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग. लेट्स सी एंड यस, गेट द लाइक्स कमिंग. मटाटा यूनाइटेड, always respect for coming on time as well as being there. Same with Manav Baga, our members in the house, of course. Manav, big up आपके लिए भी. Funny how all three transfers are brilliant, but Lukaku loan to Inter gives everyone the most relief. अरे भाई यहाँ opposition fans, मैं to be very honest and fair, let's be honest, मैं poll में जो डाला हूँ options, I have been very fair, let's be honest there. So let's give me some credit वहाँ पर. लेकिन भाई Lukaku यार क्या ही तो बोले भाई, उनका जो मैसेज था, the post था, man, he has the guts to do that. I don't know whether it's for Chelsea or what not, but energy or move on, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे भाई. मुझे तो यार ऊपर से निकल गया, लेकिन जो भी था it was not good. And yes, very close to 4.25k subscribers. Subscribe ASAP guys. In fact, road to 5k. तो मैं तो बोलता हूँ भाई very close to 5k भी. तो let's get on subscribing. Doesn't take a buck. Ankit wanting but waiting to add Ronaldo to Chelsea. अरे भाई hello Man U, ऐसा कुछ नहीं है. Big up to you as well. Do we need Frankie de Jong? Darren Lebo. चलो यार. Yes, we are going to be discussing about क्या हुआ था उस मीटिंग में. Has things been revealed? I don't know. आप मुझे बोलिए भाई कुछ आया है, क्योंकि literally every hour में there's some of the other tweet coming on, there's some of the news coming on. इसलिए मैं I didn't release the video आज सुबह. I know last night I had promised when we are doing the watch along, लेकिन भाई I'm like नहीं, let me wait if there is some proper news. लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ there are a couple of news certainly. तो यहाँ पर क्या है यार, फ्रैंकी डियोंग को तो पता नहीं. डेरेन, आप मुझे बताइए कि will you be happy? And this is a deal people and everyone out there जो भी देखने वाला है वीडियो, और I hope everyone has liked the video so that ज्यादा लोग आए and they get this news. So as per Simon Jones, क्या है डील? The deal again, people जिनको मालूम नहीं है, there is actually a particular deal that has been agreed between Barca and Chelsea. और why is that? मैं बोल रहा हूँ. When first of all, yeah, as in obviously there was a case कि यार जब आए थे Todd Boehly in Barcelona when he landed, ठीक है, journalists, reporters kind of went to him and asked यार, are you coming for Frankie de Jong? Are you coming to sell Azpilicueta? Is that the reason जब आ रहे हो? लेकिन again he didn't give much away. वो बोले यार नहीं भाई, हम तो खाना खाने के लिए आए. हम basically we have come to have a good meal. और even after coming out of the restaurant he said कि नहीं, it was a good meal therein. लेकिन भाई ये देखिए, ये उन्होंने बोला था. So are you coming for Frankie de Jong? For sign Frankie de Jong? We're here to have a meal. Yeah, for Azpilicueta to Barcelona and Marcos. Okay, so nothing, giving away nothing. That was Todd Boehly. Bhai, I am already liking the fact that Todd Boehly kind of doesn't give away much, but with his looks, he gives away a lot as well. Lekin while going, he actually said, he was asked, is there a deal? He said, yes. So I don't know, there is some deal. So what is that deal, everyone? The deal, in my opinion, again, मैं आता हूँ chat पे, big up to Darren and everyone in the chat as well. भाई, the deal which I am hearing, Simon Jones ने बोला है कि the deal that we are hearing is, man, this is, I don't know whether it's a good deal or not. Azpilicueta and Alonso going to Barcelona, which was kind of expected. Azpilicueta definitely yes. Alonso भी यार almost negotiation phase में, but almost yes. लेकिन दोनों का अगर साथ में होता है, if they are going to Barcelona, the other way around होगा Serginho Dest and Memphis Depay. भाई एक और Dutch player. I don't know man, Memphis Depay, people out there यार, Manchester United fans in house, हाँ बोलोगे यार, we are either going for Manchester United targets or ex-Manchester United players, or maybe Barca targets. I don't know. That is something which is happening. तो आप बोलिए whether that will be a good deal. Azpilicueta and Alonso bring loads of experience, भाई, और they are probably the need for Barcelona as well in a sense. Definitely Azpilicueta, एक जन तो definitely चाहिए उन्हें, in my opinion.
But Depay, मतलब where are you on Depay? भाई Manchester United में he didn't do too well, and yes, he has matured as a player, or he's more like a forward. जब United में आए थे, he was more like a winger. And of course, Serginho Dest hasn't done too well in the last season, but again, एक promising player है, एक US international है. With Pulisic, with Todd Boehly there, is there a real possibility? Because again, Simon Jones from Daily Mail ने बोला है, तो I don't know. आप बोलिए, मेरे ख्याल से it will not just be that, it will be plus money as well. और ये that is something that मुझे लग रहा है likely, because yes, अगर सोचा जाए तो we did not get Richarlison. हाँ, not that मुझे चाहिए था Richarlison, but Chelsea fans, the fact that we went for a Richarlison, ठीक है, it's clear that we need a forward. हाँ, can that be Cristiano Ronaldo? But why not Memphis Depay? Because he's not your out and out striker. He's like a floater, जो कहीं भी खेल सकता है in the front three. Just saying. Let me know in the chat, and I'm coming to the chat. Please wait. I'm coming to the chat, of course. Sudarshan Chandra, hello to you as well. Ame, of course, okay. Just for liking, okay, pass this way, no problem भाई, बाद में देख लीजिए, because there is going to be a lot of chat यहाँ पर. And yes, across clubs, हम शुरू कर रहे हैं अभी चेल्सी और बार्सा की मीटिंग के बारे में, but we are going to cover lots as well. Wrestle Universe in the house, hello as well. Ame, your thoughts on Aspi and Alonso? जैसे मैंने बोला भाई, I was hoping कि Azpilicueta could have just stayed. और कल जब वीडियो आई थी, न्यू जर्सी की वीडियो आई थी, Aspi was there, and I'm like, नहीं भाई, Aspi is there, he's not going to go. एक गट फील होती है ना, सेम लाइक यूनाइटेड फैंस की आ जाइए. बाय द वे, वीडियो दोनों की अच्छी आई है, चेल्सी और यूनाइटेड की. तो यूनाइटेड फैंस भाई, व्हाट डू यू थिंक? रोनाल्डो इज देयर इन दैट वीडियो, सो लेट मी नो अबाउट दैट एज वेल. लेकिन हाँ, आई डिडंट वांट टू गो लेट गो Azpilicueta because in the squad we are lacking leaders. हाँ, लेकिन Depay, is he not a leader? Think about it. But Alonso, I'm kind of surprised कि Azpilicueta ज़्यादा हम easily मान रहे हैं versus Alonso. I think Azpilicueta थोड़ा सस्ते में आ रहे हैं. That is one of the reasons I'm guessing. And of course, Barca would want him on the cheap because of just 1 year contract being left, right? दोनों के लिए. And yes, Barca has matched a bit of Chelsea. The upfront money will be less, but the overall package reaches to Chelsea. One now negotiations are going faster. Deal to complete it soon. Okay. चुतामनी बिग अप भाई, ये किसके लिए बोल रहे हैं आप? ये आई एम गेसिंग सर रफीनिया के लिए बोल रहे हैं. लेट मी नो ऑन दैट. आई थिंक टेलिंग रफीनिया, एंड आल्सो लेट मी नो द सोर्स. सादिक भाई, सादिक भाई कैसे हो भाई? आई होप एवरीवन इज गुड अलोंग सादिक भाई एज वेल. बट इकोनॉमिकली Lukaku was a master stroke by Inter Milan, a Trojan horse. अरे भाई साहब, exactly इसलिए मैंने डाला था ना इकोनॉमिकल बेस्ट कौन सा ट्रांसफर, और ऑफ कोर्स वो ऑप्शन होना ही था. Okay, no problem, pass this way. Play well and win the match and come back. टाटा अंकित भाई, जा रहा हूँ कल का पॉडकास्ट देखने. Yes. By the way, I hope you are back as well, because a lot of talks remaining, right? Frankie de Jong, maybe just because Jorginho is going, but Chelsea have so many midfielders. I actually okay, Gallagher is here of Jorginho. Football please, I don't quite agree with that. हाँ, मतलब all respect to you and all the love to you, लेकिन यार football please, Gallagher has different attributes than Jorginho. Certainly, Jorginho is more like a ball keeper with someone who's able to pass the ball as well. Gallagher is someone who's a very good destroyer, as well as someone who presses high. He's one of those. हाँ, वो खेल सकता है number 6 में, but I think I rather see him play as a number 8. He's really a number 8, if I'm being honest. He's not a winger. He's not a CDM. He's a proper, I would say, box to box. Jorginho is nowhere close, right? Chelsea co-owner Todd Boehly, yes, there was an agreement. Exactly, CFC Blues, and that is what I just said. That as per Gerard Roveroni, as per Simon Jones, that was what the deal was. Again, for people who came late, Aspi and Alonso going Barcelona, and Serginho Dest and Depay coming Chelsea's way. But let me jump a few comments. Like I said, you can always prioritize on chat comments with a super chat अगर आप afford कर सकते हो. But I'll try and take more comments here. Divyan said they could have done this deal secretly, but they did it in a famous place to grab the attention of media. Shrey Patil, I don't know about that, man. Again, with respect to Divyan's भाई, लेकिन it's opinion यार, it's opinion. एक gut feel होती है. And मेरे ख्याल से in fact कहीं भी जाते ना भाई, we are talking about Barcelona and Chelsea. We are talking about the new owner. हाँ, you can say that Todd Boehly ऐसे भी भाई, he has to network. He has to know people in basically European football. So he was anyway going to go to Barcelona because we've had deals पहले भी Barcelona के साथ में, and we have had major deals.
लेकिन अभी यार द फैक्ट इतना इंटरेस्ट था दोनों के प्लेयर्स में, आई थिंक इट इज क्वाइट एविडेंट कि हम बात तो करेंगे. The fact that it was a meal etc was, it could have been that an attention grabber, but I don't think they need an attention grab. Do they really need it? मेरे ख्याल से नहीं भाई. Laporta and Todd Boehly की बात हो रही है, Chelsea and Barcelona. I don't think so. I disagree there with all due respect to Divyansh and everyone who's mentioning that. But again, it's opinion and every opinion has its stake. Okay, Manav says 37 votes, 23 likes. Like कर दो guys. Come on भाई, like कर दो. Like करने से और लोग आएंगे. Certainly this video I think deserves at least 100 people. Let's be honest about it. ठीक है, let's have 100 people in. वो कैसे आएंगे? आप लोग सब लोग लाइक ठोक दीजिए, और हो सके तो आप शेयर भी कर दो अपने कम्युनिटी पेजेस में और ऑन सोशल मीडिया. मैंने किया है तो लाइक कर दो वो भी पोस्ट. Depay maybe will work for Chelsea cause work एक floating forward है, which is that exactly football play. That is my point. That Depay may just, he's not a great finisher, same like a Sterling, लेकिन again they are not pure number 9s, right? हमें pure number 9s, हमें ऐसे भी number 9 jersey cursed है. So not just that, even the position under Tuchel is not kind of working. So why not Depay? If we are getting Depay on a cheap, Depay also has a potential football creeks to also increase the value in the future. So that might be one of the things, right? I just want to ask why such high-profile negotiations are happening in common restaurants and not the club office. Headlines, rumors will only go wild after all this. Well, I don't think so यार. मतलब again we are talking about Chelsea and Barcelona में यार. मानव कहीं भी होता ना, और बार्सिलोना का इतना स्ट्रॉन्ग है ना जर्नलिस्ट का नेटवर्क, इन माय ओपिनियन, कि भाई ऐसे भी बाहर आनी थी कुछ चीजें. ठीक है, तो they didn't open just so that they are basically having it kind of clear कि नहीं, there are talks going on. Also the fact कि यार दोनों ही क्लब्स के, बार्सा फिर भी कल अनवेल की थी फॉर क्रिस्टियनसन एंड केसी इज also done as a Barca player. बट चेल्सी के लिए कुछ न्यूज आई नहीं है, तो इट्स ऑल्सो फेयर पॉइंट दैट टू शो द फैंस दैट नहीं कुछ हो रहा है भाई, हम ऐसे नहीं कर रहे. तो टू सम एक्सटेंट इट्स ओके. इट माइट बी अ न्यू मूव फ्रॉम टॉड बॉयली, हु नोस, इट माइट वर्क, मे नॉट वर्क, लेकिन आई थिंक ट्राई करना तो बनता था, माय ओपिनियन. बट अगेन आई हियर यू गाइस. डिपाई से बढ़िया तो वर्नर ही है. अरे नहीं यार, सीरियसली यू थिंक सो? वर्नर के रन्स इज वेरी गुड, बट डिपाई, he has not a very different kind of a look in terms of the way he plays and the importance of Depay. But I think there is a chance that Depay can do much more than Werner, because let's be honest, Werner का main issue क्या है ना, मतलब it's not about the footballing element of Depay that's an issue. It's a problem कि यार वो finish नहीं करता इतना. मेरे ख्याल से वो प्लेयर बहुत बढ़िया है यार, in terms of just taking on players, in terms of taking positions. I don't think Depay is an issue there. Problem is finishing थोड़ा सा, which is Chelsea's problem. वो मैं agree करता हूँ. लेकिन वर्नर का यार, आपको बॉल मिलती है तो आप टर्न करने से पहले आप बेसिकली आप एक पिक्चर बनाते हो अपने हेड में. तो वर्नर इज मिसिंग इन सच एरियाज. यस, वर्नर इज ग्रेट इन चैंपियंस लीग मैचेस एंड कप मैचेस, लेकिन व्हाट अबाउट द लीग? इन माय ओपिनियन डिपाय हैज समथिंग टू प्रूव एज वेल. बोलोगे नो, अनदर लुकाकू अनफिनिश्ड बिजनेस वाला नहीं लाओ, लेकिन भाई ही इज कमिंग फॉर अ चीप, देन व्हाई नॉट? आई एम जस्ट टेलिंग आउट देयर. और हो सकता है भाई, टेक्निकली वी आर स्टिल हैविंग टू पीपल आउट. याद रखो, वी आर हैविंग लुकाकू आउट एंड हकीम जियेश. यस, talks are going very, very strong with Hakim Ziyech and Milan. Not only him, of course, Milan are also going for the Club Brugge players जिसकी हम बात किए थे कल भी. So there are two players जहाँ पर we are losing, right, technically on paper. So that's where basically दो लोग आ रहे हैं. So I think it's good because obviously Sterling तो भाई होने वाला है. Let me know अगर Sterling हो गया है तो as I'm talking, but Sterling तो definitely होने वाला है. और ये again Chelsea fans who are impatient, and again generally fans are impatient ना, मैं बोलता हूँ most of the clubs ना announcement करती है शाम को, तो उनका just before end of day around 5:30-6:30 PM UK time वो कर दो. उस समय होता है transfer announcement. So you never know. Chelsea are leaving for the US tomorrow for basically the US tour, but maybe we just announce it tonight, and who knows, right? But talking about US tour, what about United fans? भाई कैसा लग रहा है? Very, very sad to know that Ronaldo is not even part of that Thailand and I think if I'm not Australian tour, the pre-season tour, Ronaldo is not a part of. Come on, abhi yaar things are very serious, that yaar things are looking bleak, unfortunately. Or United, in my opinion, has gotten very strong talks with किसके साथ? Dybala के साथ. डिबाला टू यूनाइटेड, आपको याद है तो 2019 में ये हुआ था जब आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग लुकाकू को दे वर ट्राइंग टू सेल, और उस समय इंटर से बात हो रही थी कि यार व्हाई डोंट वी गेट अ प्लेयर स्वैप प्लस कैश वाला डील, ठीक है, और जस्ट प्लेयर स्वैप.
तो उस समय दिबाला की मांग बहुत ज्यादा थी. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक ही वाज आस्किंग फॉर 150,000 150,000 पर वीक. अभी यार एज पर रिपोर्ट्स दिबाला's ask is only 100,000 per week, पाउंड्स में बोल रहा हूँ यहाँ पर सैलरी. तो आई थिंक दैट इज quite doable. Even 150,000 भी doable था, लेकिन again I don't think Dybala deserved that at that point. 100,000 per week is quite doable. But यार मैनचेस्टर fans, आप बोलिए, the fact that you may just lose Cristiano Ronaldo, you cannot replace him, let's be honest, right, in one season at all. But at the same time, why don't you go for a youngish proper striker rather than going for a Dybala? Matlab, I am kind of surprised. Wouldn't you actually go and kind of try and maybe talk about hijack season, maybe hijack PSG's attempt to sign Kamaka? I'm just kind of giving an idea. A youngish striker who's kind of coming up the ranks, जो Eric Ten Hag के अंदर सीख सकता है ज़्यादा. Or would you have a Dybala with a Rashford or Dybala, playing like a false two, just like what Chelsea are trying to do with, Sterling and Havertz? Let me know in the comments, or maybe we are even trying with Depay. Who knows, right? Depay is like in match he can switch position, like start of yes, exactly. That's what I'm saying. Like मैं तो यार as a Dutch fan I don't mind. हाँ, I'm disappointed with Depay के performances के साथ overall and fitness as well, but maybe it can be a welcome change for him. Okay. If Real Madrid put Mendy on sale, should Chelsea go on him? यहाँ पर quickly आ जाते हैं इस पर भी. Yes, 100%. अगर जबर भाई Real Madrid are putting Mendy on sale, 100% we should go on him. Yes, मैं बोलूँगा yes. Because as per reports, Ian Maatsen is ready to fight for his place. लेकिन is he ready कि यार वो compete करे Ben Chilwell के साथ? नहीं, in my opinion नहीं. In एकदम frank opinion. And yes, Serginho Dest अभी आने वाला है. He can play on the left, but he's not left-footed. तो हमें चाहिए होगा एक बैकअप लेफ्ट-फुटेड जो compete करे with Ben Chilwell. So if Mendy is okay to do that, हो सकता है. लेकिन Mendy, why would he leave Real Madrid अगर वो वहां पर as in खुश है? Like the fact is वहां पर भी he's being asked to be competing. तो हो सकता है he's not happy, and that is why म्यूचुअल ग्राउंड उन्होंने डिसाइड किया भाई मेंडी को सेल करेंगे. अगेन वो डिसाइडेड नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, बट यस देयर आर रिपोर्ट्स सर्टेनली. जबर भाई आई वुड एग्री. एंड यस आप लोग सब लोग थंबनेल में देखोगे भाई रोनाल्डो डूइंग सू इन रियल मैड्रिड अवतार. देयर इज आल्सो न्यूज़ कि भाई कल रोनाल्डो का बेसिकली फ्लाइट ट्रैक किया गया था और ही वाज आल्सो इन स्पेन, ही वाज आल्सो नियर मैड्रिड. तो इज देयर मोर टू इट? इज देयर अ चांस कि भाई रोनाल्डो कैन गो देयर एज वेल? Or is it just Bayern Munich and Chelsea in the fight, or Manchester United? आप वो भी बोलना भाई कमेंट्स में एकदम. चाहिए तो नहीं रियल मैड्रिड को रियली. इफ आई एम आस्किंग, यस लुका जोविक जा रहे हैं फियोरेंटिना, बट आई डोंट सी दैट नीड बिकॉज हजार्ड इज देयर. बट यू नेवर नो, रोनाल्डो अवेलेबल है ऑन अ चीप प्राइस इन रियल मैड्रिड, और ही इज अ लेजेंड ऑफ रियल मैड्रिड, बिग टाइम गोट है. तो हु नोज, राइट? एस्पिलिक्वेटा रियलिस्टिकली वोंट गेट मच गेम टाइम इन बार्सा. इट मेक्स सेंस टू स्टे एट चेल्सी. श्रेय, गुड पॉइंट. लेकिन यार आज के दिन में बारसा में राइट बैक में कौन शुरू करेंगे? श्रेय, लेट मी नो. मतलब दैट इज इंटरेस्टिंग. मे बी आप बोलोगे राहो माइट प्ले, अगर कुंडे जाते हैं तो कुंडे माइट बी यूज्ड एज राइट बैक. इन एस्पिलिक्वेटा इज अ प्योर राइट बैक, और फॉर स्पेन ही इज एक्चुअली स्टार्टेड अ लॉट ऑफ गेम्स रिसेंटली. तो हो सकता है Alonso, I agree that he'll not be a starter. लेकिन Aspilicueta, because Jordi Alba अभी भी better है, but Aspilicueta might be a starter. Shreya, I feel that. Unknown boy, thank you for joining. Chutamani, yes, that was for Rafinha, and the source is Jacobs. Ben Jacobs is Gerard Romero. Yes, exactly. तो Rafinha की बात कर लेते quickly. Are people, any Leeds United fans out there? How are you feeling, man? मतलब your man is like wanted, but at the same time, as per reports, Chelsea are getting and Leeds are getting frustrated by Rafinha. Having said that, Chelsea अभी भी बैकफुट नहीं लिए, तो we have not withdrawn. हमारा जो ऑफर था for Rafinha, if I'm not wrong, 60 मिलियन का था. पाउंड्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर. 60 million pounds plus add-ons, that would be 65 million pounds almost. So that was our offer. And yes, as per reports, it's not like वो नहीं चाहता है Chelsea, but he wants Barcelona big time, और डेको है उनके एजेंट. बार्सिलोना ने किया है मैच, बट मैच कैसे किया है भाई चुतामनी भाई और एवरीवन एल्स? बार्सिलोना ने मैच किया है. फर्स्टली इट्स नॉट टू क्लियर कि वो यूरोज में है कि पाउंड्स में. एक तो वो है, ठीक है, इट्स नॉट क्लियर. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बाय बेन जेकब्स और जेरार्ड रोमेरो, बिकॉज़ आई डिडंट सी दैट मेंशन्ड. जस्ट मैच किया गया, बोला गया. सेकेंडली, इट इज नॉट अ वन टाइम फी. It is basically they are going to be paying installments. So are they something
that they are going to be using here Rafinha's interest into the tactic of making him sign for Barcelona. अभी भी लगता है भाई रफीनिया बार्सिलोना ही जाएगा, बट अगर नहीं होता है ये सॉर्ट वेरी वेरी सून, आई थिंक चेल्सी माइट जस्ट विड्रॉ और लीड्स माइट जस्ट से नहीं भाई हम चेल्सी को दे रहे हैं, मतलब दैट माइट बी वन ऑफ द थिंग्स. तो यहाँ पर काफी फ्रस्ट्रेशन ग्रो हो रही है और मे बी दैट इज व्हाई बार्सिलोना यार उनको पता है कि चेल्सी को क्या चाहिए. चेल्सी को चाहिए एक वाइड मैन और एक स्ट्राइकर, ये चाहिए था. अच्छा, तो विद Depay and with Sterling, we are kind of filling both the spots. और इनफैक्ट हमें दो बंदे ऐसे मिल रहे हैं जो प्रॉपर स्ट्राइकर भी खेल सकते हैं अगर चाहे तो, और दो बंदे ऐसे मिल रहे हैं जो विंगर भी खेल सकते हैं. तो मे बी दैट इज वाई उनको पता है भाई यहाँ पर हम रफीनिया को मना लेंगे, वहां पे हम जा रहे डिपाई को दे रहे, और वी आर गेटिंग एस्पिलिक्वेटा, अलोंसो इन रिटर्न एंड सर्जियो जस्ट वी आर गिविंग अवे. तो वहां पर इंटरेस्टिंग रहेगा काफी. अगेन नॉट अ बैड डील ओवरऑल, लेकिन मैं पर्सनली खुश नहीं हूँ बिकॉज ऑफ एस्पिलिक्वेटा इन पर्टिकुलर. मेरे ख्याल से स्क्वाड में हमें चाहिए लीडरशिप और भी. We need center backs ASAP. बाकी other areas can wait. Rahul, exactly, भाई. मतलब that is the thing, and yes, people, lot of comments coming in, floating in, and yes, I am coming to other transfers as well in other clubs. भाई लेकिन एक positions की बात हो जाए, because Rahul is right. As much as there might be some excitement कि नहीं हमें finally Sterling मिल रहा है, Depay possibly मिल रहा है, Dembele, what about Dembele people? He's still a free agent. Dembele का क्या न्यूज़ है वो भी हम बात कर सकते हैं. लेकिन भाई whatever it is, सेंटर बैक्स में अभी तक हमारे सेंटर बैक्स कौन है? If you play 3 the back कंटिन्यू करें, we have Malang Sarr, we have Thiago Silva and Chalobah अगर एस्पिलिक्वेटा जाते, ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. और कॉलविल आप बोलोगे एज अ बैकअप एट बेस्ट, लेट्स बी ऑनेस्ट. व्हाट इज दिस मैन? दैट इज नॉट चेल्सी फुटबॉल क्लब. तो हमें चाहिए सेंटर बैक, और सेंटर बैक हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सी थी लास्ट 10 दिनों के लिए यार? इट वाज मैटियास डे लिक्ट. डे लिक्ट का हमने किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 65 मिलियन प्लस हमने किया था बिड, ठीक है, एज पर द लास्ट रिपोर्ट्स. हाँ, हमने ऑफर किया था जॉर्जिनियो टू देम, लेकिन दे डिडंट वांट टू स्वीटन और उसमें मिक्स नहीं करना चाह रहे थे. जॉर्जिनियो अभी भी वो इंटरेस्टेड है थोड़ा यूवेंटस. एंड वी हैड आल्सो ट्राइड वर्नर, दे वांटेड पुलिसिक हम देना नहीं चाहते थे, और वर्नर वो लेना नहीं चाहते. तो वहां पर क्या हुआ? मीनवाइल बायर्न म्यूनिख आ गई, और बायर्न म्यूनिख करी है भाई बवाल, क्योंकि बायर्न म्यूनिख बोली है भाई वी ऑलरेडी हैव टू सेंटर बैक्स, बट कम ऑन, we may need some voice on the pitch, we may need someone जो basically physical element है, or someone who's that good or that youngish center back, or that is De Ligt. और बायर्न म्यूनिख अनलाइक अदर ट्रांसफर जहां पर उन्हें सस्ते में मिले, इसलिए मैंने पोल में ऑप्शन भी डाला है बायर्न म्यूनिख, क्योंकि दे हैव गॉट माजरावी, ग्रावेनबर्ग, साडियो माने, और कौन, एक और बंदा मिस करो शायद, सस्ते में मिले भाई बायर्न म्यूनिख को. दे हैव सेव्ड ऑल द मनी, और वो पूरा पैसा लगा रहे हैं De Ligt पे. और यस, 70 मिलियन यूरोज डिलिक्ट पर, 70 मिलियन यूरोज प्लस एड-ऑन्स मिला के 75 मिलियन यूरोज, व्हिच इज काइंड ऑफ स्लाइटली बेटर देन द चेल्सी ऑफर इन माय ओपिनियन, ठीक है. तो वो लग रहा है वही होने वाला है. एंड एज पर रिपोर्ट्स ये है कि De Ligt इज कन्विंस्ड विद बायर्न म्यूनिख और ही हैज मेड अप हिज माइंड. हां, बहुत सारे रिपोर्ट्स ये भी बोल रहे हैं ही डजंट वांट टू कम टू चेल्सी. वो ट्रू नहीं है, अभी तक ट्रू नहीं है, बट हाई चांसेस, मैं बोलता हूं ऑलमाइटी ऑलमोस्ट यार De Ligt जाने वाले बायर्न म्यूनिख. इसीलिए चेल्सी का सेंटर हाफ सिचुएशन क्या है? Maybe that is why एक डिस्कशन हुआ even about जूल्स कुंडे. Who knows कि जूल्स कुंडे भाई आप लोग किसको ले रहे हो? हम लोग जूल्स कुंडे चाहते हैं. टॉड बॉली बोले होंगे लपोर्टा को कि जूल्स कुंडे के लिए someone who has actually come to London already. एक हमने कवर किया था स्ट्रीम में, remember? I think we had all the goats in the stream and definitely हमने डिस्कस किया था that जूल्स कुंडे was actually in London to kind of एक सेंस लेना या फील लेना कि भाई what is London. एंड मे बी आप बोलोगे बहुत सारे प्लेयर्स के लिए वो प्रेफरेंस होता है, एंड दैट्स वेयर वी विल कम टू फ्रैंकी डे जॉन्ग एज वेल. लेकिन जूल्स कुंडे वी माइट गो हाई, और अनफॉर्चुनेटली हमें पे करना पड़ेगा 65 मिलियन फॉर जूल्स कुंडे एज वेल. तो वी माइट, अभी लग रहा है भाई चेल्सी माइट गेट जूल्स कुंडे, क्योंकि यार पर्सनल टर्म्स वहां पर अग्री हुई है, अनलाइक बेसिकली जो हुआ है रफीनिया के साथ उल्टा हुआ है, वेयर ही इज अग्रीड पर्सनल टर्म्स विद बार्सिलोना. तो जूल्स कुंडे तो चेल्सी मैं बोलता हूं माइटी है वापस से, एंड De Ligt टू बायर्न म्यूनिख है माइटी. बट do Barcelona need a center half to play, जहां पर उन्हें पे करना पड़े 65 million? I don't think so. They have an Araujo, they have a Eric Garcia, they have a Christensen, and they have a PK. At least एक सीजन के लिए बढ़िया है. I don't see that happening, that वो 65 million pounds पे करने वाले for the Jules Koundé, unless भाई Sevilla kind of say that नहीं हमें चाहिए Depay, आप चेल्सी को क्यों देते हो? तो अगेन ये थोड़ा डोमिनो है, इधर Depay जाएगा सेविया और चेल्सी, मुझे लग रहा है. लेकिन टाइम विल टेल. एंड व्हाट अबाउट फ्रैंकी डी जॉन्ग पीपल?
And yes, थोड़ा ये comment लेते हैं. Really, does Depay fit the Tuchel mold? Only Lyon has used him well. That 2-4-3-3. Can he play an inside forward? I have my reservations. Well, मानव, he has played that at times, लेकिन हाँ, I hear you, आप जो बोल रहे हैं. और याद करो भाई, टुकल भी खिलाते हैं 4-3-3, 4-1-4-1 और 4-3-3, something that वो भी गए हैं लास्ट सीजन. तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ही यूजेस. और जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, अगर इफ दे आर गोइंग फॉर अ 3-5-2 which is also in the talks, 3-5-2 के लिए Depay will not be a bad option. Think about it. The David Antaw Sport, big up everyone भाई, चेक करिए. और इनको ही नहीं, we have featured a lot of channels on our channel as well. एक channels का टैब होता है, तो वहां पर जाकर सब लोग को सब्सक्राइब कर दीजिए, नॉट जस्ट टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी एंड ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस. मैं तो बोलता हूँ भाई. एंड शाउट आउट टू द मेंबर्स, एंड मेंबर्स के भी वी हैव कपल ऑफ मेंबर्स हु हैव चैनल्स, एंड दे आर बेसिकली वन ऑफ देम इज ऑलमाइटी गोट. So yes, we are having membership open, and of course super chats open as well. But the fact is, yeah, do support the newer channels as well as, you know, the channels which are there. I would always suggest that, absolutely. So let's do that, people. Don't forget that. But who would you start at Chelsea front three combination for next season, considering we get Sterling and hypothetically we get Ronaldo? Well, again, थोड़ा बात कर लेते हैं रोनाल्डो एंड फ्रेंकी डियोंग के बारे में, डेविड, and that's what I was coming to. Like, yes, Ronaldo Chelsea is looking the real deal, लेकिन in my opinion maybe वही है ना, Ronaldo, as much as he's a goat and real goat, in my opinion, he's not as mobile, he's not as floating as what हमें चाहिए. तो अगर हमें अटेम्प्ट किया जा रहा है by Barcelona to get a Depay, I think I might take it अगर मैं होता in Boehly's place. But again, it depends on Tuchel. I am okay with whatever Tuchel wants, bottom line. And yes, I would love Ronaldo for a year, definitely, no two ways about it. But at the same time, yeah, अगर नहीं भी आते तो I would love it as much as Tuchel wants. तो मैं देखता हूँ भाई, I am actually looking at and believing that, you know, a 3-4-1-2 or a 3-5-2 something that हम कर सकते हैं. Maybe that 3-4-1-2 में one होगा आपका either Gallagher or Mason Mount or Pulisic, right? और आपके दो upfront होंगे Havertz, Sterling, who would start, and you have Depay on the bench. That is an option, obviously. And of course, Timo Werner might be just kept. क्योंकि यार, if you are playing two striker formation, वो हो सकता है. Or if you are going a 4-3-3, that's brilliant. यार. You definitely have a Havertz, you'll have a okay, Sterling on the right hand side, and on the left hand side you'll have Pulisic. ये मैं start करूंगा in a 4-3-3. और and of course you'll, as a number 8, आपके पास है Kovacic, Gallagher, you have Mason Mount, you have a Loftus-Cheek. इतने सारे options है. So I think that will make sense in my opinion. Yes, but we need a DM for that. Or talking about midfielders, भाई Frankie de Jong. तो Frankie de Jong, people, everyone, क्या लगता है? मतलब वो मुझे सच में बोलूं सबसे लेस लाइकली लग रहा है, बिकॉज Frankie de Jong costs what? Let's be honest, आप प्लेयर एक्सचेंज की बात भी करोगे, फिर भी Frankie de Jong will cost you north of 60 million as a base price. Manchester United had already almost agreed, bhai, 65 million if I remember right, 65 million plus 25 million, you know, that was in euros if I remember right. वो एक almost agreed था. और अगर चेल्सी को पे करना है उतना, and get a player who will play in a double pivot and not play the single pivot, और अगर single pivot में खेले भी तो I think we are taking off some of the attributes उससे. He can do a lot more. तो मेरे ख्याल से वो सबसे less likely लग रहा है मुझे. तो Manchester United fans, don't get angry about Ronaldo. Ronaldo totally depends upon Tuchel and how pre-season first week goes, but it's between Ronaldo and Depay for me. And in midfield, we might not go for Frankie. We might not go because it costs too much, and for us to change the system. So that's my opinion. Yes, I would love it. अगर Ligt अगर अभी भी interested थे ना, अगर interested थे, तो मैं बोलता Frankie de Jong to Chelsea would have been a mighty case. क्योंकि यार Ligt, Frankie और Nathan Ake जो as per reports is very very close, ठीक है, तो तीनों ही, और वहां पर भी हम ओवर पे कर रहे हैं. Remember, talking about money, we might have to shell out 45 million pounds as a base for Nathan Ake minimum. So that is a bit too much in my opinion, but it is Chelsea tax. हमारे पास center backs नहीं है, तो we might end up with Nathan Ake and Jules Koundé. और वहां पर yes, we might give 105 million भाई दोनों का मिला के 60 million plus 45 million. और भाई साहब 105 million for the Jules Koundé, Nathan Ake, really? लेकिन we have been taken to task by whatever it is. इसलिए मैं बोलता भाई फ्रेंकी के लिए पैसे नहीं दे सकते. We need two center backs proper. But okay, चलो ये तो ले लिया मोहम्मद. Thank you for coming on. Yes, we actually had done it. We had actually done it, Jabbar bhai. Again, in very short, they had actually गिरवी रख के पैसे उनको मिला. Simply put,
they have the assets and a certain percentage of the assets basically गिरवी रखा है उन्होंने और at a certain time they will get a certain money. So that is what it is. और of course वो money, certain money काफी ज़्यादा money है. I think close to 700 million है is what you're talking, 600 700 million. So that is a lot of euros, right? So that is what you're talking. Again मैं ये किया था in the past. I think आपने miss किया था stream, लेकिन again we will try and cover again because it kind of requires a proper explanation. I'll come back to this later, but thanks for the question, of course. यार लाइक्स में काफी कंजूसी हो रही है आज. क्या हो रहा है भाई? लाइक्स में काफी कंजूसी हो रही है भाई. लाइक्स का मैंने टारगेट रखा नहीं है, शायद मैं भूल गया हूँ, पता नहीं क्या है, लेकिन लाइक्स कर दो भाई. लाइक्स तो बनता ही है, उससे मेरी बैटरी चलती है. मेरा बेसिकली बैटरी है वो है नंबर ऑफ लाइक्स एंड नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस. एंड ऑफ कोर्स सब लोग बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबा देना, certainly helps. And Manav, thank you for reminding the chat, of course. This would be a good add up to Chelsea squad. Yes, he's more of a squad player, absolutely, I agree. He's not a starter. I'm not wanting to get him as a starter. Problem is Ronaldo is brilliant as well. Of course, he's a goat. Lekin if Ronaldo comes to Chelsea, I think, come on, it's Ronaldo. We cannot keep him on the bench. We know that. He has to start. Or isliye Chelsea's gameplay changes altogether. With Depay can be more floating, or maybe when PSG did well in the Champions League that year, Depay did well. So maybe Tuchel sees something as well in Depay. Who knows? If you're a Chelsea fan, tell your club not to hijack De Jong's deal. Aman, मैंने बोल दिया भाई, De Jong तो शायद नहीं होने वाला है. That is my opinion. Again, if I'm proven wrong, I won't be unhappy because he's a very good player. लेकिन at the same time, सच में बोलूं, I know a lot of people, 90% लोग disagree करेंगे इससे. I don't think Manchester United also require a De Jong to be there to elevate their midfield. Manchester United have always not played with two defensive midfielders. They've not. That is what a Manchester United way is. But in my opinion, the way that current squad is, current defense is, आपको चाहिए भाई एक proper DM चाहिए. De Jong, he can play centre half, he can play DM as well, but I think वो ज़्यादा, he's someone who carries the ball forward as well. So I think I would rather see him that way if I'm a Manchester United fan. So I am kind of confused. Eriksen can sit there, he can be a playmaker, he can be a DM as well. But again, आप Eriksen से ले रहे हो what he's good at. Okay, if you're asking him to kind of just defend more. He'll bring a lot more. Erik ten Hag will like a flowing game, जैसे बोला है उन्होंने. But I think I'm very, very shocked that you're not linked with a proper DM. Lisandro Martinez, by the way, yes. Let's go to Manchester United for a few minutes, of course, people. यहाँ पर okay, fair enough. No man, you have full faith in ETH, unlike Chelsea fans are questioning Tuchel. Bhai, I'm not questioning Tuchel. I don't know who you're referring to, but no man, you big up, bhai. Okay, yes, Mana, welcome to that. And Nidhi in the house. Nidhi ko shout out, bhai. Menace and the Monk. If Ronaldo moves to Chelsea, Ankit has promised he will dance in the middle of 100 Feet Street. अरे भाई साहब, Nidhi, I'm not in that bus still. I'm not going to be really excited. Like I said, if you're hearing me, I am actually okay with Depay coming and Ronaldo not coming, as much as Tuchel wants. So yeah, I am happy if you're getting. मैं बोलूं सच में, if we had got Ligt, De Jong and Ronaldo and Ankit, ठीक है, वो 4, in fact उसमें 3 Dutch players है, no coincidence. तब डेफिनेटली मैं मान लेता है चैलेंज. तो ये लेकिन होने नहीं वाला, इसलिए आई काइंड ऑफ फाउंड द इजी वे. बट हैविंग सेड दैट, भाई बिग अप टू मेंसन मॉन्ग, एवरीवन डू गिव देम अ फॉलो एज वेल. Big up to Talk MU as well. Big up, or yes, Talk MU reminds me as well. Thanks for coming on as always, bhai. Talk MU is a brilliant designer. Not only that, his link is below, Twitter link. Give him a follow. And I've also tagged him for the channel that he owns. That is Football versus Cancer. And this is just, I'll take a couple of seconds. There's a channel called Football versus Cancer. We run Almighty Blues FC and Almighty Sports Plus. उस पर तो आप करो ही subscribe. But do not forget that channel, which I've also tagged below in all my videos. ठीक है? This is a channel where Talk MU started. It's a fight against cancer via football. ठीक है? तो let's support that cause as well. Definitely. And yes, let's get to 100 likes, people. यहाँ पे देख रहा हूँ भाई कितने likes हुए. यार likes काफी कम हुए. 71 likes हुए. Hopefully we'll get to 100 likes very soon. I am पुटिंग अप अ टारगेट. यार ये अपना टारगेट है पूरे वीडियो का. ठीक है, तो अभी आधी घंटा जाने को, होपफुली हम पहुंच जाए उस टारगेट में. एब्सोल्युटली. एंड बिग अप टू 1 hour बस भाई. टॉकिंग अबाउट 1 hour बस, यस, फॉर पीपल आउट देयर जो मांग रहे थे भाई FIFA 22 हमें चाहिए. FIFA 19, यस, काफी अच्छा लग रहा है कुछ लोगों को. होपफुली वी विल कंटिन्यू द रेट्रो सीजन. ऑफ कोर्स वो तो कर ही रहा हूं, लेकिन FIFA 22 भी आ गया है. So you will be seeing that on Almighty Sports Plus as well. Let me know, people. Do you want me to continue the retro season or just play FIFA 22 or both? Let me know in chat. वो भी definitely will take a poll.
Okay, waiting for final news of Ronaldo. I need to buy jersey. Please tell from where can I buy goalkeeper jersey of the well, I'm not too sure Danish उसके लिए for the new jerseys. ठीक है, तो I'll get back to you on that. लेकिन definitely भाई Danish, big up Manchester United fan in the house. सब लोग आप बोलिए भाई, what is your gut about Lisandro Martinez? और as per news क्या आया था? लिसांड्रो मार्टिनेज एंटनी का फर्स्ट कल एज पर रिपोर्ट्स कल शाम को आया था कि न्यूज भाई दे आर आस्किंग फॉर 120 मिलियन यूरोज, 120 मिलियन फॉर लिसांड्रो मार्टिनेज एंड एंटनी। और फिर ब्रेकिंग न्यूज आया भाई, लिसांड्रो मार्टिनेज के साथ डील हैज बीन अग्रीड, और डील हैज बीन अग्रीड फॉर व्हाट, 50 मिलियन यूरोज। हाँ, थोड़ा सा टैक्स डेफिनेटली इन माय ओपिनियन, या ही इज अ अडैप्टेबल प्लेयर, बट आई थिंक अडैप्टेबल प्लेयर्स कम एट अ कॉस्ट। बट द फैक्ट दैट वो प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस नहीं ला रहे हैं to some extent that थोड़ा सा overpriced है। लेकिन fair enough भाई, you need a player who can challenge Harry Maguire, in the left center back position. You need one player, or he is the ideal player to challenge that. He's in the right age as well, or someone who can be molded even further by ETH, जो he knows how he plays and vice versa ना। तो do you see Lisandro Martinez actually playing in midfield, because he's someone who actually likes to carry forward the ball. He likes to play with the ball as well. तो आप सोचोगे यार, maybe the DM option is a natural for him. What is your preference as a United fan or even as neutral? What do you see? Let me know in the comments. And yes, अपने बैकग्राउंड में काका के नीचे वाला जर्सी किसका है भैया? अच्छा, ये है नेदरलैंड्स का जर्सी भाई, बिग अप भाई। ये डायरेक्ट जोकर इज एक्चुअली आकाश। Akash is basically verified on Twitter. He is a journalist. He actually writes stuff, and he was on the channel as well. Just I think last weekend. So brilliant, bhai Akash. Again, हम बात करेंगे काफी. A Leicester fan at that. So definitely give him a follow on Twitter. It's Akash, and the Direct Joker is his Twitter handle if I remember right. तो ये है नेदरलैंड्स का 2010 का जर्सी, और वो है रॉबिन का जर्सी। यस, इट्स रॉबिन, माय ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर। It is Netherlands का 2010 का I think alternate jersey. Yes, Waka Waka. That was his, and of course Robin was fantastic in the tournament as well, and that's what it is. Boris Johnson के report भाई बहुत ही funny है। Fire.com, thanks for coming on. Okay, अनिरुद्धा बोल रहे, it will be one hell of a deal if you pull off Depay, Jong and Dest for Pablo Escobar and Aspi plus some money. Wow, exactly. Aniruddha, very good comment. Yeah, as much as it's painful to see Azpilicueta go and to go to Barcelona, where they've already taken Christensen, nothing against Barcelona, but at the same time, getting rid of Pablo Escobar, yes, he's a cult hero. Alonso is a cult hero, absolutely. I think Chelsea fans will maybe start, praising him once he leaves. He's one of those players. भाई लेकिन let's be honest, player power में दो इतने सारे स्टोरीज जो आते थे ना अलोंसो का, इट इज नॉट अ सीक्रेट। वो प्रिटी श्योर क्या वो अगेन अंडर लैम्पार्ड भी गुस्सा हो गए थे बीच में, एक बार बस में जाकर बैठ गए थे। तो देयर इज एक है उनका बेसिकली विच इज अफेक्टिंग द टीम एज वेल एज हिज डिफेंसिव क्वालिटीज इन बैक फोर इज नॉट गुड। तो अगर हम जा रहे बैक फोर, इट मेक्स सेंस टू गेट रिड ऑफ हिम, ही हिमसेल्फ वांट्स टू गो। बट Depay, if you are able to get Dest, someone who can as in feel at home with Pulisic being there, और biggest advantage क्या बोलूं, Pulisic को wing back नहीं खेलना पड़ेगा, that is the biggest advantage with Dest coming in. But Depay is really interesting for me. I think he fits the mold in my opinion जो Tuchel देख रहे हैं in a forward, जो हम चाह रहे थे from a Richarlison. I think Depay can, हाँ थोड़ा सा physical element he needs to improve definitely, लेकिन can he improve still? Why not? And yes, let's charge my battery by putting more likes, people. There are 75 watching. सब लोग भाई 1 सेकंड लगेगा, लाइक ठोक दीजिए, और बाय चांस आप सब्सक्राइब नहीं करो तो वो भी कर दीजिए टू बोथ आवर चैनल्स। इट्स लिंक्ड बिलो एज ऑलवेज इन डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट कपल ऑफ लाइंस। बाय रिपोर्ट्स आ रही थी कि बार्सा कुड लुक टू स्वैप रीस जेम्स विद फ्रैंकी और डेस्ट। हाँ, ये वाला नहीं होने वाला। डेविड ऑस्टिन ने क्या, तो बार्सा का इंटरेस्ट था लीग गेमिंग, यस देयर वाज एन इंटरेस्ट, लेकिन कम ऑन आज के दिन में कौन सी अपार्ट फ्रॉम मे बी लिवरपूल, मे बी अ मैन सिटी, मैं बोलूंगा एटलीस्ट फॉर द टाइम, यहाँ मैन सिटी भी इंटरेस्टेड थी फॉर व्हाटएवर रीजन, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज टू टीम्स शायद ही कोई वर्ल्ड का राइट बैक है जहां आप बोलोगे ही इज बेटर देन रीस जेम्स। हाँ, मे बी एट बेस्ट कंपेरेबल होगा, लेकिन हु इज बेटर देन रीस जेम्स? लेट्स बी ऑनेस्ट, आई थिंक इन माय ओपिनियन English right backs Kyle Walker, Trent or Reece James kind of hold that. Hakimi to some extent maybe, but Hakimi defensively इतना नहीं है, Trent भी नहीं है, but come on, maybe Trent का age factor भी kind of helps, Hakimi का भी है, but I think Trent has proven over a longer period of time in my opinion at the very very top level. लेकिन हाँ, definitely they were interested but नहीं होने वाला absolutely.
ओके FIFA 22 करियर मोड, लेट्स गो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करने दो मुझे, मैं उस पर भी आऊंगा, तो होपफुली बाय नेक्स्ट वीक स्टार्टेड, बट टुनाइट करियर मोड तो हो तो चलेगा ही, क्योंकि यार वहां पर हम ट्रांसफर विंडो के बहुत पास है, तो हम वहां भी करेंगे एब्सोल्युटली। चेल्सी पाउ टॉरेस को क्यों नहीं ले रहा है, एग्जैक्टली। वाओ, व्हाट अ कमेंट भाई। मैं अगेन फॉर पीपल आउट देयर हु डोंट नो, आई वाज लकी इनफ, आई वाज इनवाइटेड टू सोनी टीवी, एंड वहां पर जॉन डाइक्स आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। मैं पहला ही बोला भाई सबसे इंपॉर्टेंट साइनिंग कौन सी है चेल्सी के लिए, मैं जाता पाउ टॉरेस के लिए, क्योंकि पाउ टॉरेस गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लेइंग इन द बैक फोर और बैक फाइव। ठीक है, पाउ टॉरेस गिव्स यू गोल्स फ्रॉम सेट पीसेस एज अ डिफेंडर। पाउ टॉरेस गिव्स यू द लीडरशिप जो आप मिस कर रहे थे। हाँ, ही डजंट गिव यू द प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस जो नेथन आकी लाएंगे, बट आई थिंक ही इज बेटर इन ऑल एस्पेक्ट्स। नेथन आकी के लिए आप कितना 45 मिलियन पाउंड प्लस एड ऑन्स, तो 50 मिलियन ऐसे भी आप स्पेंड कर रहे हो, तो पाउ टॉरेस और 10 मिलियन डाल के आप विलारियल को टेम्प्ट करो ना पाउ टॉरेस के लिए। If Sevilla are getting rid of Diego Carlos and possibly Jules Kounde in one window, why not Villarreal getting rid of Pau Torres? Quite possible. और मैं ये भी सरप्राइज हूँ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो चल रहा था बात विद पाउ टॉरेस, वो भी कम हो गया है। आई डोंट नो फॉर व्हाट एवर रीजन। अरे कोई नहीं यार, रेक जोकर मतलब इट्स अबाउट who's used to what, I'm used to that, रेक जोकर, but big up to you as well, of course. And yeah, I used to play with a keyboard as well, only, but that is something that, you know, if you find it funny, well, at least I'm making you laugh. That's what I would say. But thanks for the comment here, always. Chelsea are advanced with Aki. He's good defender, but we want a solid defender like Koulibaly. Okay, let's talk about Serie A thoda sa. What about Serie A? And yes, for people who are coming on late, भाई सब लोग कर दो, likes ठोक दो, और उतना ही नहीं, अगर हम super chats मिले तो we'll put in back in the channel. Like मैंने बोला, I'm already upgrading on Almighty Sport Plus from FIFA 19 to FIFA 22, hopefully in coming days. But we are also looking to get a mic, etc. So a lot of things will go back to the channel for people who are thinking where the money goes. अभी तक आया नहीं मेरे पॉकेट में, फिर भी we are trying to invest. So let's do that. अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, if you feel we deserve it, only then. But there is a membership open. So, but coming to the talks of Serie A. Serie A में यार एक तो डिबाला का स्टोरी हमने कवर किया था। डिबाला is basically looking like Manchester United हो सकता है इस बार, second time lucky for Dybala. But what else? What else? Like very very interesting भाई, सर्जियो ओलिवेरा। तो सर्जियो ओलिवेरा जो basically खेले थे रोमा में last season on loan, right, from Porto, and yes, of course, he won it with Jose Mourinho, the Conference League. He is surprisingly moving to Istanbul. Yes, he is going to Galatasaray, looks like, and Sergio will join Galatasaray on a permanent deal from FC Porto for 3 million. और Mkhitaryan हमने already cover किया, he is moving to Inter. So are you not surprised that Jose Mourinho letting go Mkhitaryan and Sergio Oliveira in the same window? Yes, he was on loan. Maybe मैं सोचा था they will try to make it permanent, but नहीं, looks like it नहीं. But yes, for what else? What else? Of course, Paul Pogba भाई ये तो हो गया है. He is actually flying to Turin as things stand, and Di Maria as well. He was in Turin, so Di Maria as well to Juventus हो गया है. तो Juventus, what do you see? मतलब are you seeing कि भाई talking about Ronaldo again with Serie A talks? Imagine भाई Juventus have a left winger who is coming back, a world class left winger in Chiesa. Federico Chiesa आ रहे हैं वापस. हाँ, he has been signed permanently. Or he is coming on after long-term injury. ठीक है. They are having a McKennie as a central midfielder who is coming back after long-term injury. They are already having Denis Zakaria और Locatelli जो last season में sign किए गए थे, right? तो दो proper midfield उनकी बन गई. उनके पास वाइड है Chiesa. हाँ, Rabiot अभी भी I think बाहर निकलेंगे मेरे ख्याल से, but he was played wide for whatever reason. I don't see him fitting anyway. और right side में now they have got Di Maria. So, would you argue that Juventus has one of the most underrated midfield in Serie A or even in Europe? मतलब मेरे ख्याल से imagine a Chiesa, a Di Maria, a Zakaria, a Locatelli, and a McKennie. Just imagine that midfield, भाई. काफी strong midfield है. और मैं Paul Pogba तो बोला ही नहीं. तो Paul Pogba है. तो that midfield is something. So with that midfield, is it not tempting for Ronaldo? कि भाई, that is some place that I know Turin. I know it wasn't a great exit. Do you see Ronaldo even moving to Turin? There might be still a chance. हाँ, if they are changing the formation थोड़ा सा, absolutely. Zaniolo is coming. Okay. Zakaria to Juve is done. यार Zakaria Madrid पंडित भाई, shout out है भाई. सब लोग यार ये भी याद रखिए, हम लोग लाइव है Madrid पंडित में भी, I think 25 minutes from now.
So let's actually be there as well, not just on all our channels. Definitely, do subscribe to them as well. Dennis Zakaria to UA was already done, right? It was already done last window. Mein. Lekin हाँ, correct me if I'm wrong. I think it was a permanent move from what I remember. But yes, again, people, let's get in the likes. Certainly helps. Like Zaniolo, well, interesting football fusion. Zaniolo is a very good player, absolutely. Is He's coming to UA? Okay, wow. Wow. अगर ये होता है, then Juventus are creating a monster of a team, भाई already. मैं तो बोलूँगा already they're creating a monster of team. But do they need that? Just like Chelsea. Chelsea को मिल रहे हैं Sterling, maybe a Depay, maybe a Ronaldo. Do they need that? Doesn't Juventus need a defender? Or talking about defenders, भाई ब्रेमर जो लग रहा था कि ही might go to Juventus as well, नहीं, इंटर मिलान ही जा रहे हैं. आई थिंक ब्रेमर का 40 मिलियन यूरोस की बात चल रही है. तो पीपल, ब्रेमर वाज आई थिंक द डिफेंडर ऑफ सीरिया लास्ट सीजन. So he is actually going to looks like it. He's very much going to Inter Milan for 40 million euros. In my opinion, it is worth it. It is worth it because they are possibly going to be losing, Skriniar. So they need it as well. लेकिन मेरे ख्याल से Juventus में ज़्यादा ज़रूरत थी भाई. Juventus are going to lose. Ligt to Bayern Munich looks like it. Unfortunately, not Chelsea. And of course, Chiellini. So two proper defenders छोड़ रहे Juventus. So let me know in the chat by Juventus. Which defender? Koulibaly is probably the option. So Koulibaly, mixed reports that he wanted to leave Italy. लेकिन मेरे ख्याल से Koulibaly will stay. So Koulibaly to Juventus again, maybe around 40-45 million होगा euros और 35 million pounds बोलोगे. That is a very good option. Experience center half वही चाहिए था. तो वहां पे मैं बोलता हूँ mighty, absolutely. Okay, Madrid versus Juventus. Who would you take this year? Tala, मतलब to be very honest. I don't care. लेकिन it can be anyone, यार, to be very honest. लेकिन in fact Madrid, यार, I would still say Madrid is very very strong. In fact, okay, Chiesa and Di Maria both are right wing. अच्छा, लीडा बिग अप भाई आपको भी. लेकिन यार Chiesa plays as a left forward as well. He kind of cuts inside and scores. I think मेरे ख्याल से ज्यादा threatening he's as a left winger than a right winger. आपके मॉड्स क्या बढ़िया है. अरे मैड्रिड पंडित भाई आप बढ़िया हो यार. मैं तो बोलता हूँ. और यस भाई, अगेन पीपल हु आर नॉट kind of aware, Madrid Pundits is a great channel as well. It's not just our channel. So everyone watching, I would hope that you support our fellow brothers absolutely and join us at 6:30 as well. Barcelona can use Todibo to get Koundé for 35 to 40 million. If Sevilla goes for Todibo, then Barca has 25% in future sale for Todibo, and they can use that 25% to reduce the fee of Koundé. भाई दिव्यांशु, आपका कमेंट भाई सर आंखों पे, एब्सोल्युटली. लेकिन यार लेट्स बी ऑनेस्ट, नीड किसकी ज्यादा है? आई थिंक चेल्सी माइट जस्ट ओवरपे एंड गेट हिम, मैन. मतलब अगर बाय चांस हमें कुंडे भी नहीं मिलता, डिलीट भी नहीं मिलता, चेल्सी फैंस आप बोलिए, वेयर आर वी गोइंग? We might have to keep Aspi. हम Aspi को नहीं जाने दे सकते because Aspi plays at right center half, or we might have to stick to 3 in the back. You know what? कुंडे के लिए मैं इतना ज्यादा परेशान भी नहीं हो रहा हूँ because he kind of is a great prospect for future in the back 3 especially. Back 4 में खेला है for Sevilla, but come on, let's be honest. In Premier League, do you see Koundé being a world class player in 6 months time in a back 4? I don't. हमें चाहिए वो, लेकिन क्योंकि Thiago Silva in 6 months time will be 6 months older. मैं नहीं देखता Thiago Silva starting every alternate match as well in 6 months time. वो problem है. Hopefully he proves me wrong. Thiago Silva always is proven people wrong. लेकिन हमें चाहिए भाई, और हमें चाहिए rather एक experienced player. तो there is an argument for Chelsea as well कि भाई he's not the ideal centre back, लेकिन यार beggars are not choosers again. I don't think so that we can kind of wait, because अगर वो भी नहीं, I don't think हम link हो रहे for Pau Torres for whatever reason. तो और बचा कौन भाई? We were linked with Max Kilman of Wolves. We were linked with Webster of Brighton. मतलब I'd rather have a Koundé and let him kind of perform rather than a Webster, in my opinion, as much as people might disagree. Let's see. Wisdom Football in the house. Thank you. That's a nice one. Or yes, I hope आप like कर दियो, subscribe कर दियो. दिया मैं डार्क हॉर्स ऑफ चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन. ओके, आई थिंक आप यूवेंटस के बारे में बात करो. कुलिबाली चेल्सी, हियर वी गो. आई डोंट थिंक सो. मैं यार जैसे हियर वी गो था, मैं पहले फैब्रिशियो के ट्वीट्स देखता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा नहीं है वो होने वाला है एनीवेयर क्लोज. लेकिन AC Milan, by the way, talking about Serie A, are pushing for Charles D. Kettler. Charles D. Kettler is basically the Club Brugge player जो खेल सकता है as an attacking mid, as a wide player as well.
he is someone who is quite good. Club Brugge हमने देखा था in the Champions League. So if they get him and Ziyech, और उतना नहीं, breaking news, PSG fans in the house, any PSG fans, ब्रेकिंग न्यूज ये भी है कि भाई रेनाटो सांचेज का जो पीएसजी वर इन पोल पोजीशन, हाँ स्कमाका के लिए दे आर स्टिल इन पोल पोजीशन, अभी भी नेगोशिएशंस आर ऑन, नॉट येट डन भाई, लेकिन रेनाटो सांचेज 10 million euros फ्रॉम लिल, AC Milan have almost struck a deal. Talk about that. Talk about that. So replacing a Kessie with a Renato Sanchez and having Ziyech on the wide, or maybe Asensio अगर by chance Ziyech नहीं आता है भाई, और Rafael Leao they are keeping Brahim Diaz as a attacker as well in the central position. Charles Kettler is one more option there, and they have Origi and Giroud up top. Do you think AC Milan are favorite for the Serie A and not Juventus despite Juventus's transfers? Let me know in the comments कौन लग रहा है, because Inter अभी तक कर ही नहीं है Dybala over the line, इसलिए मैं बोल रहा हूँ yes Bremer is going there but I don't think it'll elevate their starting 11, right? Okay. Yeah, exactly. Dortmund, yeah, Dortmund is also doing brilliant business, absolutely. Pogba to Juventus will only work if Allegri doesn't play defensive football. Also, the one onus is on Locatelli, Zakaria, McKennie to cover Pogba. Exactly. वो गंदा जो dirty work होता है ना, they have to do the dirty work, and Pogba they have to allow to flourish. हाँ, when Pogba was younger, maybe उस समय he had a Pirlo. So Pirlo का क्या advantage था ना, माना, I don't know if you remember. तो पियरलो का एडवांटेज था कि पोग्बा एट टाइम्स टू प्ले ऑलमोस्ट लाइक अ लेफ्ट विंगर, ठीक है, तो काफी बार लेफ्ट वाइड चल जाता है, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी हमने काफी देखा है व्हेनेवर ही टू बी इन फॉर्म, बट he wanted that ball to be played. Now problem is with Allegri, the way he plays and the personal he has, who's that playmaker? Who's that playmaker in Juventus? वो एक playmaker मिस कर रहे हैं मेरे ख्याल से, because Pogba is not that playmaker. हाँ, he can play great passes, we all know that, but he'd rather be at the end of things or getting inside the box, because at the end of the day you don't have, you have a Vlahovic of course, but a technical player up front चाहिए ना, to kind of add there to Vlahovic. So in my opinion they're missing that playmaker अभी भी. That's going to be interesting. इसलिए मैं बोल रहा हूँ मिलान मेरे लिए अभी भी स्लाइटली फेवरेट, अगर वो करते हैं द रूमर्स जो हो जाओ, मेरे ख्याल से यार ये अच्छा करेगा भाई मिलान. रेनाटो सैंचेज वेरी गुड. बोरिस जॉनसन चेल्सी गो. अरे भाई नील वॉर्नॉक का देखा है, नील वॉर्नॉक, एनीवन फॉलो नील वॉर्नॉक ऑन ट्विटर? भाई बढ़िया यार, नील वॉर्नॉक इज a specimen. I don't know people who followed his managerial career, यार कुछ ना कुछ ड्रामा होता है भाई नील वॉर्नॉक जब भी होते हैं ना साइडलाइन में, like a Harry Redknapp, he always had something in him, like बहुत ही funny element था, लेकिन काफी यार ये तो शेयर करना पड़ता है everyone, थोड़ा मजा हो जाए. We'll come back to the transfer in just 1 minute, लेकिन ये तो शेयर करूंगा भाई, ये प्रथम ने मुझे याद दिला दिया कुछ और मैं देख के हंस रहा था भाई. ये देखिए भाई, नील वॉर्नॉक बोल रहे had a lot of fun choosing my cabinet. Check about it, man. Neil Warnock is so funny, man. Breaking news. Warnock to step in. बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई नील वॉर्नॉक, तो मतलब स्पेसिमेन. यार आप बोलिए भाई, आपके लिए हु इज दैट मैनेजर हु वाज ऑलवेज दैट स्पेसिमेन, हु ऑलवेज यू मिस इन मे बी द लीग यू फॉलो? मेरे लिए एक जन जो है इन द प्रीमियर लीग, लुई वैन गाल. यस, आप सोचोगे मैं जोसे मोरिन्यो प्राइम तो बोलूंगा ही, लेकिन लुई वैन गाल इज वन पर्सन दैट आई मिस यार. मतलब एंटिक्स, हाँ, नॉट अ मैनचेस्टर सपोर्टर, आई एम अ डच सपोर्टर, बट अगेन लुई वैन गाल के एंटिक्स यार, आई लव्ड इट. Spurs can upset the UCL Giants. Their signing has been on point. Let's see. मतलब अभी भी यार, they need to perform as a team, but great signing. I agree on that absolutely. Okay, then now I have doubts. Re-signing Umtiti. Oh my साहब, Umtiti यार doubts हो गए, देखते कहाँ जा रहे हैं. What is Chelsea transfer status? अद्वै बेगम भाई आप लेट हो, हमने काफी डिस्कस किया है. ट्रांसफर स्टेटस ये है कि यार एक तो हमारे क्लब जो है ना, दे ऑलवेज अनाउंस, तो लोग बोल रहे भाई कहाँ है स्टर्लिंग की अनाउंसमेंट, कहाँ है, 24 घंटे में आने वाली थी भाई. अभी अनाउंस बेसिकली शाम के 5:30 या 6:30 बजे. होपफुली आई एम होपिंग कि आज या कल में आ जाए, बिकॉज कल हम निकल रहे हैं फॉर यूएस फॉर द प्री सीजन टूर. एंड यस, हमने कवर किया है रोनाल्डो का, व्हाई इज नॉट गोइंग टू प्री सीजन, व्हाट आर द चांसेस ऑफ हिम गोइंग टू से चेल्सी, बायर्न म्यूनिख, यूवेंटस, नॉट रियल मैड्रिड, डिस्पाइट थोड़े से रूमर्स वो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ काफी हमने बात की अबाउट डियोंग. वुड यू प्रेफर डियोंग, डिपाई, और वुड यू जस्ट गो फॉर बेसिकली हमारे जो टारगेट्स रहे फॉर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, बिकॉज दीज आर न्यू टारगेट्स. थोड़ा स्वैप डील्स डोंट एक्चुअली वर्क, बट इन डिपाई's केस इन माय ओपिनियन इट माइट जस्ट वर्क एज अ बैकअप.
ओके, यू नो फ्रॉम 2010 जो टीम यूसीएल जीती है उनके पास क्रोएशिया का प्लेयर जरूर होता है और पेरिसिच टू स्पर्स। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कम ऑन भाई, कम ऑन। हमारे पास भी है ऐसे तो, लेकिन हाँ, यू नो व्हाट, डेफिनेटली व्हाट यू सेइंग, इंटर लुक स्ट्रांग, आई हेट लगा बट इन एरिया ही मे डू वे बेटर। भाई मतलब अदवे बोलिए भाई, उसके पोस्ट के बारे में क्या लगता है, मतलब व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन दैट? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। Is an option very similar to Joao Felix with good physicality and versatility to play in the front three. Exactly, he did very well in the game. या मुझे वही याद है उस गेम में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दो प्लेयर स्टूड आउट। वाज इट लैंग द डच प्लेयर एज वेल, डच प्लेयर हु प्लेज वाइड, लैंग एंड यू नो चार्ल्स डी केटलियर, आई थिंक दीज आर टू प्लेयर्स हु स्टूड आउट फॉर क्लब ब्रूज। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मानव। Messi fan but not PSG. Okay, bro, Inter need Simeone like coach because they have only physical players. Interesting. Okay, यहाँ पर और comments लेते हुए, okay, Barcelona have matched Chelsea's overall offer for Rafinha. Advanced talks with Leeds United going on now. Ben Jacobs बोल रहे हैं exactly. लेकिन the fact is, it has not been said कि yes matched. Let's assume that is, you know, euros or pounds. I don't know, pounds, 60 million pounds, or is it, you know, in installments or in one go? वो थोड़ा सा अभी भी है। अभी मैं बोल रहा हूँ रफीनिया का 50-50 है, वी आर नॉट आउट ऑफ इट येट, मैं बोलूंगा। लेकिन हाँ, बार्सिलोना में इंटरेस्ट ज्यादा है तो आप बोलोगे बार्सिलोना ही जाएगा, इसलिए वी माइट गेट टेम्प्टेड विद द डिपाई ऑफर ऑफ बार्सिलोना। Well, I feel Spurs will have a nightmare season. जब भी you expect them, yeah, that is also there. लेकिन again, Conte है भाई, Conte है, absolutely. That is something that यार बाबा आज, if I'm not wrong, he said, he told me he's traveling. I don't know if he's you know, he's already traveling, but like you know, Mohit bhai, मतलब we are definitely a family, and I would love for him to be there. And अगर आपको बाबा को बुलवाना है तो डेफिनेटली हम बुलवाएंगे। इनफैक्ट मैंने कल ही मैसेज किया था और मैं रोज ऑलमोस्ट वी आर इन टॉक्स, डोंट वरी अबाउट इट। वी इनफैक्ट आई वाज ऑन बाबा's channel yesterday, we had a lot of conversations, so hopefully he'll come very soon on the channel again. But हाँ, not just Baba, we call the entire community. And at the same time भाई मोहित, just एक रिक्वेस्ट है, of course brilliant, I love everyone to core, don't get me wrong, लेकिन the fact is भाई at some point, you know, I would also like to sometimes express about what I feel. मैंने चैनल इसलिए खोला था, राइट? तो मैं आज सुबह वीडियो के साथ नहीं आया था, तो इसलिए मैं आ रहा हूँ, आपको न्यूज दे रहा हूँ, प्लस आपके साथ डिस्कशंस कर रहा हूँ। अगर लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आती है पैनल तो मैं इतना डिस्कशन नहीं कर पाता इन टर्म्स ऑफ द चैट जो मैं कमेंट ले रहा हूँ सर। हाँ, तो दैट इज अगेन पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, लेकिन हम बैलेंस करेंगे एंड आई वुड लव एनीवन एंड एवरीवन टू बी देयर। इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी फॉर अ रीजन, ऐसे नहीं बोलता हूँ। लेकिन हाँ, सर्टनली मैं मोहित, इन केस आप फॉलो नहीं कर रहे हो और एनीवन एल्स एज वेल, just to let you know everyone, I am following football. My first game was 1994 World Cup final, and I'm following Champions League from 1999-2000 season. 1999 final भी देखा था मैंने। और yes, club football week in week out, be it EPL, Serie A, or even to some extent La Liga, I am in following very closely, and I am a proper fan who used to also play football at the time, you know, very consistently from 2002 to 2003 season. और आप चेक करिए, हमारे एक प्ले लिस्ट है, उसमें बाबा भी है, बहुत सारे बाकी क्रिएटर्स भी है, मैं खुद भी हूँ। दैट इज कॉल्ड नो योर क्रिएटर, ठीक है? तो नो योर क्रिएटर में वी आर हैविंग an introduction की how we fell into the love with the game, right? तो वो आप देखिए। I don't know if it helps or inspires you. अगर हम थोड़ा भी you know कर सकते हैं in terms of getting interest in football to you, it will be great, absolutely. लेकिन everyone is welcome to the channel, you know that we love everyone, and उस बात पर like ठोक दीजिए। For me, Serie A is most physical league. Interesting. Depay will be good for Chelsea. Can play as winger as number 9. Okay. अद्वै मैन, अद्वै इज ब्रिलियंट यार। थॉट्स ऑन कैसी? तो कैसी भाई, देखो कैसी अगेन समवन हु फॉलोड मिलान क्वाइट क्लोजली, मैं बोलूंगा कैसी का बेस्ट पार्ट क्या है भाई, इन 12 मंथ्स ऑफ टाइम ही हैज रियली इंप्रूव्ड एज अ प्लेयर, ठीक है? ही हैज रियली इंप्रूव्ड एज अ प्लेयर, तो वो दिखता है अंडर जावी ही कैन लर्न मोर, ही कैन इंप्रूव मोर, he can play different positions, he is physical, talk about physical, he is physical as well, और वो टेक्निकल भी है, काफी कम प्लेयर्स होते हैं वैसे। हाँ, आई वुड से प्राइम माइकल एसियन के मे बी लोअर वर्जन है, डेफिनेटली नोवेयर क्लोज, लेट्स बी ऑनेस्ट, बट कैसी कैन रीच दैट लेवल, और दैट्स व्हाट मैं देखता हूँ। माइकल एसियन जैसे ही कैन कवर, ही कैन प्ले एनीवेयर इन मिडफील्ड, कैसी कैन बिकम दैट प्लेयर अगर वो थोड़ा सा यू नो इंप्रूव करे ऑन एवरी एस्पेक्ट। बट फॉर मी ही हैज अ गोल इन हिम, he is a penalty taker also in case आपको चाहिए तो, but at the same time you know he can defend as well, he's a leader as well, तो काफी सारे एलिमेंट्स है कैसी। लेट्स सी, मतलब मेरे ख्याल से आई थिंक डबल पिवट में ज्यादा सूट करेंगे अभी के लिए, और 4-3-3 में भी सूट करेंगे। आई डोंट थिंक सिंगल पिवट अगर जाती है वैसे बार्सिलोना, राइट?
Missing Pep at La Liga, Lida बोल रहे हो, okay, fair enough. Missing Claudio Ranieri a lot. He was a very likable guy, absolutely. मतलब so many clubs loved him, यार. Yeah, absolutely. Let's see. Vamsi, all the best to Barca fans. ये बोल सकता हूँ. मैं तो भाई hoping against hope that something happens in a forward line and defense line more importantly. Gus Poet, Sunderland, the greatest pick. Ankit bhai remember. अरे भाई साहब, Gus Poet. Sunderland, was it that season जहाँ पर Aspi ने दिया था penalty? Correct me from Abhishek. I think it was a 2013-14 season. 13-14 था क्या? It was Mourinho's comeback season. Let me know in the comments. भाई चेल्सी को वन वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक, वन अबव एवरेज सेंटर बैक और एक एवरेज सेंटर बैक साइन करना चाहिए. अच्छा, तो यार मैं बोलूंगा एवरेज तो नहीं बोलूंगा, एक यंग सेंटर बैक होगा, वो है कॉलविल, वो तो आ रहा है वापस. एक एवरेज सेंटर बैक है नेथन आकी, और एक वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक 100% अग्री. वहां पर मैं जा रहा था फॉर पाउ टॉरेस, बट पाउ टॉरेस फॉर व्हाटएवर रीजन चेल्सी नॉट इंटरेस्टेड लुक्स लाइक, तो वी माइट जस्ट गो फॉर द जूल्स कुंडे. कोई नहीं. दिलीप टू चेल्सी क्या लगता हो यार? लूसी आप लेट आए हो, मैंने कवर कर लिया ऑलरेडी, सो डू वॉच द वीडियो बैक, बट बिग अप, आप आए हो तो बढ़िया लगा है. बार्सिलोना, यस, ये तो है ही, ये न्यूज है एब्सोल्युटली. ओके, द बिड इज अराउंड 55 मिलियन यूरोस एंड एड ऑन्स. ओके, तो अगेन आप देखो यार, यहाँ पर डिफरेंस है, दिव्यांशु. मैं जैसे एक्सपेक्ट किया था, इफ दिस इज ट्रू, तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस फॉर पीपल आउट देयर. चेल्सी ने किया था 55 मिलियन पाउंड्स प्लस एड ऑन्स, ठीक है, और बार्सिलोना ने किया 55 मिलियन यूरोस प्लस एड ऑन्स एज पर दिस ट्वीट, एज पर दिस कमेंट. अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज. बट लेट्स सी, इंटरेस्ट टेल्स यू अ लॉट, राइट, अबाउट राफिनिया's इंटरेस्ट. अभिषेक, यस, कल हमने उसके बारे में बात किया था. एंड यस, जैसे लीडा बोल रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द स्ट्रीम एंड बी अ मेंबर टू हेल्प द चैनल. एब्सोल्युटली. ओके. मैं तो डर रहा हूँ भाई, सच में बोलूं तो, बिकॉज एट द सेम टाइम यार, can it be a Lampard kind of season where हम just goal score करें ज्यादा? We'll go that way. Let's go that way. What do you say? काफी सारे number 8 से player 4-3-3 and just go. Napoli is now considering to offer a contract extension to Koulibaly. ये चल रहा है बहुत दिनों से दिव्यांशु, लेकिन मुझे लग रहा है it is time that he moves on. भाई कितना रहेंगे भाई Napoli में? Its age has come. Even for his sake, I'm saying, भाई he should win some trophies. He deserves to win some trophies in Serie A as well. तो I think यार स्कुडेटो के लिए ज्यादा चांस है in my opinion, Juventus and Inter Milan. हाँ, इवन चेल्सी और बार्सिलोना में तो डेफिनेटली है, तो इन टर्म्स ऑफ कप्स, लेकिन आई स्टिल फील दैट नैपोली इज नॉट देयर. ओके, अंकित भैया, जस्ट अ क्यूरियस क्वेश्चन, व्हाई यू रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम कनाडा? भाई मेरा कंट्री है, तो दैट वाज ऑलवेज इन द प्लान. मैं गया था वहां पर for higher studies, and yes, I worked there for a few years as well, but again I had 2 stints वहां पर, and then I came back. Obviously during COVID I thought it's better to be with my people, and that is in India, right? So इसलिए I came back absolutely for now, but again you never know, right? मतलब nothing is permanent in life. Congrats for yesterday win. रात और definitely भाई, मतलब मजा आ गया कल रात को. Yes people, we do cover some cricket as well on Almighty Sports, not just football there, so do check out that channel as well. भैया किमिक आएगा प्रीमियर लीग, कभी अच्छा लगता है मेरे को. अच्छा, किमिक नहीं आएगा यार, मुझे नहीं लगता, मतलब आई रियली डाउट इट, क्योंकि यार वो बायर्न म्यूनिख का, ही इज अ पिन अप बॉय, ही इज द फेस ऑफ बायर्न म्यूनिख ऑलमोस्ट, so that is why I'm kind of saying that. लेकिन यहाँ पर क्विकली यार, आई नो मैक्सवेल कॉर्ने का क्वेश्चन आ रहा है, बट आई डोंट थिंक वो एलिवेट करता है, हमें अपग्रेड नहीं करता हमें, तो आई रियली डाउट इट. हाँ, मे बी कमिंग फॉर अ चीप, अगर हम वॉर्नर को बेच रहे हैं, मे बी टू मेक मनी, दैट माइट बी वन थिंग, बट हाँ, ही इज अ गुड प्लेयर, डायरेक्ट प्लेयर जो हमें चाहिए, लेकिन आई डोंट थिंक एलिवेट्स आर विंगर्स रियली. आई रादर स्टार्ट अ पुलिसिक एनीवे. Zaniolo to Juventus, भाई मैडनेस हो जाएगी भी फरासत यूवेंटस की मिडफील्ड. तो आई जस्ट सेड देयर ऑलरेडी 6 वेरी गुड मिडफील्डर्स, आप विंग्स को ऐड करो तो. लेकिन यहाँ अगेन पीपल क्विकली, मैं फेब्रिशियो के ट्वीट्स ही देख रहा हूँ, समथिंग इंपॉर्टेंट जो मैं मिस किया हूँ तो मैं कवर कर लूंगा क्विकली. यस, हमने पूरा मीटिंग के बारे में बोला है. आई हैव स्पोकन अबाउट साइमन जोन्स, जो बोला है, क्या अग्री हुआ है क्या नहीं हुआ है, दैट आल्सो वी हैव स्पोकन. बट आप बोले भाई, आपके हिसाब से क्या होने वाला है चेल्सी, बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ऑफ कोर्स लॉट ऑफ अदर क्लब्स. बायर्न म्यूनिख इज आल्सो कनेक्टेड इन द वे, राइट? तो वहां पर इंटरेस्टिंग रहेगा. लेवेंडोव्स्की टू बार्सा, वो तो लग ही रहा है, वो तो होने ही वाला है. आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. आई नो उन्होंने बिड किया है, लापोर्ता ने बोला है दैट वी हैव काइंड ऑफ गॉन विद अ प्रपोजल एंड देन अप टू बायर्न म्यूनिख टू एक्सेप्ट और नॉट. तो मुझे लग रहा है होने वाला है. बट एक जो हो गया डील, वो है स्टीवन बर्गवाइन. टॉटनम स्पर्स फैंस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्टीवन बर्गवाइन टू आयाक्स? Does it mean that Anthony surely is moving out? But Anthony का
प्राइस टैग भाई 80 मिलियन यूरोस बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल से, दैट इज काइंड ऑफ वियर्ड। लेकिन स्पर्स दे हैव गॉटन क्लेमेंट लॉन्गले, काफी अच्छा बैकअप है। आई डोंट सी हिम एज अ स्टार्टर इन प्रीमियर लीग टू बी वेरी ऑनेस्ट, डेविस इज मोर एक्सपीरियंस, तो दैट्स व्हाई मैं वो बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, पेरिस सेंट जर्मन या पीएसजी, इट विल बी इंटरेस्टिंग क्या करेंगे। आई डोंट सी रोनाल्डो गोइंग टू पीएसजी, that's not going to happen। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक ससुओलो स्ट्राइकर स्कमाका शायद जाएंगे वहां पर। और यहाँ पर भाई जाते जाते वी हैव गॉट अ सुपर चैट। Vamsi bhai, big up. First of all, thank you, yaar. Means a lot. And again, like I said, all the super chats, all the membership fees which is coming on is ideally going back to the channel. हम करने वाले इन्वेस्ट ऑलरेडी अपडेट कर दिया है तो FIFA 22 फ्रॉम FIFA 19 ऑन ऑलरेडी स्पोर्ट्स प्लस, लेकिन यहाँ पर भी हम करने वाले हैं एब्सोल्युटली। एसपी लीडर वर्सेटाइल 3 मिलियन, वाओ वाओ। Alonso 12 million. Oh bhai sahab, it's reality bhai of modern football. Vamsi, big up, and all people out here, do not forget we are also going live on Madrid Pundits. I think Madrid Pundits हमारा शुरू होने वाला है. Let me see if I've got the link already. I've gotten the link, yes. So let's actually go to Madrid Pundits. मैं community में भी share कर दूंगा अभी. तो we will be there, people. Join us and we'll continue the transfer discussion. वहाँ पर काफी discussion होने वाला है between Madrid people as well as Chelsea and Manchester United, Barcelona भी. और यहाँ पर TCSB को भी डेफिनेटली प्रणाम उनको भी कर दीजिए सब्सक्राइब डेफिनेटली। एंड डू नॉट फॉरगेट भाई, वी हैव अ मेंबर फुटबॉल विद कमेंट, शाउट आउट उनको भी, डेफिनेटली ही हैज अ न्यू चैनल, सपोर्ट हिम, सपोर्ट स्पोर्ट्स टॉक इन माहिम, वो भी हमारे ऑलमाइटी गोट है। नॉट ओनली दैट, एनीवन हु इज बेसिकली स्टार्टिंग अ चैनल और इवन अस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डू सपोर्ट अस, डू कंटिन्यू दैट एंड लेट इन योर प्रेडिक्शंस। वी विल कम बैक, होपफुली अनाउंसमेंट हो जाए भाई। चेल्सी फैंस कम ऑन, एंड मैनचेस्टर फैंस लिसांड्रो मार्टिनेज के लिए तो कांग्रेचुलेशन, लुक्स लाइक इट्स एक्चुअली हैपनिंग। और मैं जो भी कमेंट्स नहीं लिया हो ना, प्लीज कम टू मैड्रिड पंडिट्स, हम वहां पर होपफुली लेंगे। यश और यार काफी लोग अभी जुड़ गए भाई, बिग अप। लेकिन यार मैं काफी कवर किया हूँ, डू वॉच द स्ट्रीम, आई विल कम बैक लेटर। हम रात को आज लाइव है फॉर टाइम में करने वाले पब्लिश, बट फॉर फीफा एंड मोर टॉक्स, तो हम और डिस्कशन करेंगे और फीफा खेलेंगे on Almighty Sports Plus. So do not forget to subscribe there. And till next time, take care. Big up to all the mods as well. Bye.